लैपटॉप के लगे जी किटी, क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है किटी? मेरा माउस पे किटी, आपको मेरे रास्ते में से हटना पड़ेगा। हटो प्लीज। मैं इसको देखो ये क्या कह रहा है, लैपटॉप क्यों मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा इसको म्यूट कर दो। Hope that's better. Okay, okay. So, दीदी हो सकता है कि आप यहाँ से हट जाओ प्लीज? हो सकता है ना? कुछ मुझे चाहिए होगा ना, मैं अपने टेबल से लेके आऊँ। ठीक है, हम यहाँ से इसको चार्जर को भी पहले ही चार्जर को जगह पे लगा लें ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं हो इधर से उधर हिलाने की उसको। ओके जी 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 जी, क्या बात है? क्या बात है? एक मिनट लाइट ऑफ कर दी है थोड़ी देर के लिए। ओके जी, अभी लाइट ऑफ करके यहाँ से हटा के आप यहाँ से जाओ। आपने खाना खा लिया है किसी, अब आप मुझे परेशान नहीं करो, आप प्लीज यहाँ से जाओ। आपको पानी पीना है तो मैं आपको पानी दे दूँगी। ठीक है, मैंने आपके पास स्टेप नहीं करना, प्लीज पीछे हो जाओ। पीछे मैं आपको पानी देती हूँ। दे रही हूँ ना, फ्रेश पानी दे रही हूँ। किटली फ्रेश पानी दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मिसेस जावेद आ गई हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। मैं अगर अपनी कैट को पानी दे दूँगी तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। चलो यहाँ से आके लो, यहाँ से आके लो इधर। कोई नहीं पिया, आपको नहीं पिया। चलो शाबाश, आपको ही नहीं आ रहा। हाँ जी सॉरी, मेरी जो कैट है ना वो, उसको जब मैं खाना पकाने लगूँ तो उसको प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसको पहले देख रही थी मैं ताकि उसका मसला हल करूँ। वो पानी पी ले तो मेरी जान छूटे। अच्छा, चार्जर भी सेट है, कटिंग बोर्ड भी ठीक है, और क्या चाहिए? Okay, so we are ready to go live. एक काम रह गया था,
सही है। अच्छा जी, थैंक यू सिस्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं भी बस अब थोड़ी देर में स्टार्ट करने लगी हूँ, फ्यू मिनट्स जल्दी आ गई थी ताकि मैं इसका वहाँ पे शो हो जाए कि लाइव ऑन है, फिर शुरू करती हूँ। हमारे बाहर कौवे लड़ाई कर रहे हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, आप अपने काम शाम करें, मैं भी बस रेडी कर रही हूँ अभी सब कुछ। ओके, लैपटॉप की समझ नहीं आती कि इसको बंदा कहाँ रखे। कटिंग बोर्ड तो हमें चाहिए यहाँ पे। तो चार्जर भी सेट है, लैपटॉप भी सेट है और एवरीथिंग एल्स भी सेट है। सही है जी। ये शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। जरा इसको रिफ्रेश कर लूँ मैं। थोड़ी गड़बड़ चल रही है लैपटॉप के साथ, इसलिए इसको रिफ्रेश करना पड़ता है मुझे। अच्छा जी, तो सबसे पहले कटाई शटाई का काम कर लेते हैं जितनी देर में बाकी फ्रेंड्स आ रहे हैं। अंडा पराठा रोल बनाने का सोच रही हूँ, जिसमें अंडा जो है वो पराठे के साथ चिपक जाता है और बच्चे आसानी से रोल करके खा लेते हैं। उनको रोल बना के पकड़ा दो तो उनको आसान लगता है। ठीक है, मैं लाइट भी ऑन कर दूँ, पता नहीं फ्लाइज कौन से आ गई हैं या जगह। ओके, सही है। जितनी देर में फ्रेंड्स आ रहे हैं मैं अनियन को स्लाइस कर लेती हूँ। बहुत ही बारीक स्लाइस करना है बिकॉज मेरे ऑमलेट को पराठे के साथ चिपकना है। तो अगर बहुत बारीक कटिंग नहीं होगी उसकी तो वो मोटा मोटा रहेगा उसके ऊपर। जितना बारीक आप उसको स्लाइस कर सकते हैं कर लें। I will try to slice it as thin as possible.
अभी मोबी भाई भी नहीं आए, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। किसी का कार अलार्म खुल गया। चलो शुक्र है कार अलार्म तो बंद हो गया, नहीं तो बहुत ज्यादा शोर डालते हैं ये कार अलार्म्स। आज हमारे भाई कव्वे भी बोल रहे हैं और ट्रैफिक भी। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मोबीज किचन, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम एंड वालेकुम अस्सलाम साकी। आज थोड़ा देसी मूड हो रहा है, इसलिए देसी तो बनेगा लेकिन थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ, बच्चा फ्रेंडली। मेरा आंसर 20 साल का हो गया, लेकिन अभी उसको पराठा दो तो उससे खाया नहीं जाता, वो उसको हाथ नहीं लगाना चाहता। तो फिर मैं उसको अंडा पराठा एक साथ करके और फिर रोल करके तो फिर उसको उसमें पेपर में डाल के देती हूँ ताकि उसका हाथ ना लगे, फिर खाता है वो। थोड़ा वो भाईजन वाला मसला है उसका ना, वो टच नहीं कर सकता रोटी को या पराठे को, इसलिए बहुत फाइनली चॉप कर रही हूँ मैं प्याज को, बहुत फाइनली, ताकि वो मोटा मोटा ना लंपी सा ना हो जाए। मिसेस जावेद हमारे साथ हैं, लेकिन वो साथ अपने काम भी कर रही हैं, लाइव ऑन है, वो साथ अपने बच्चों को देख रही हैं और हमारा साथ भी दे रही हैं। थैंक यू वेरी मच मिसेस जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। मोबी भाई थैंक यू फॉर कमिंग, जज़ाकल्लाह। एक्स्ट्रा फाइन उसको चॉप कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर हम रेगुलर ऑमलेट बनाएं तो उसमें थोड़ा थोड़ा चंकी प्याज जो है वो चल जाता है, लेकिन इसको मैंने पराठे के साथ चिपकाना है, इसलिए मुझे ये बहुत फाइन चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं मूवी कह रहे हैं कि आई विल बी इन एंड आउट एज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन। ओके मूवी, कोई बात नहीं, आप जितना भी आ सकें आसानी से आएँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम बिल्कुल ठीक हैं, हम कौन सा यहाँ पे भी तेज तेज लिंक लगाने हैं या कुछ करना है, हमने तो बस चिल करना है यहाँ पे। जिसने आना है आराम से रिलैक्स होके आए, हमारे पास बैठे आके नाश्ता करें, कम्युनिटी पे मैसेज छोड़ें एंड वी विल बी फाइन इंशाल्लाह। पहले जिंजर को कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कर लेंगे, क्या उसका नाम है, ये वाला। जब अंडा पराठा बनेगा तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, चाहे बच्चे किसी भी एज के हों।
क्योंकि उनको पराठे को और अंडे को टच नहीं करना पड़ता। सच में बोल रही हूँ। मुझे लगता है मैंने इसकी रेसिपी डाली थी लाइव के बाद। मैं उसका ना वीडियोस में जाके अगर मुझे मिल गई तो मैं उसका लिंक लगा दूंगी। थोड़ा आज मेरा अपना भी मूड ऐसा ही हो रहा है अंडे पराठे वाला। बहुत थिन स्लाइसिस करके जिंजर की, तो फिर उसको मैं और प्याज की तरह बिल्कुल बारीक उसको काट लेना है, इतना कि वो मुंह के अंदर आए तो तंग ना करे। as बारीक as you can। I'm just, you know, I don't know. It's to keep changing the food so nobody gets bored. It's very hard, you know. बच्चे एक ही चीज एक दो बार खा ले तो बोर हो जाते हैं, बेशक फिर फ्रिज में पड़ी रहे फिर कोई नहीं निकालता। और ब्रेकफास्ट आज नहीं फिर बनाया था, हम सीधा ही लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा करने लगे हैं, इसलिए एक एक रोल भी सबको मिल जाएगा तो सब माशाल्लाह खुश भी हो जाएंगे और साथ हम चाय बनाएंगे। इसको भी इक्वली फाइन कर लिया हमने। आज चिल 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 वाला दिन है, आराम से रिलैक्स होके जो भी फ्रेंड्स आए आराम से बैठे, मजे से बैठे, कम्युनिटी पे बस मैसेज कर रहे हैं। दैट्स ऑल आई आस्क। दैट्स ट्रू, ये भी है। पता है मेरे लैपटॉप के ऊपर थोड़ा सा पानी गिर गया हुआ है जिसने मुझे इतना प्रॉब्लम दिया हुआ है ना। ये हाथ पेपर जो है वो मैं बस छोटा सा एक पीस डालूंगी, ये वाला पीस नहीं, यहाँ से काटती हूँ एक साइड से, अंडे में अच्छा लगता है। ये डालूंगी माइल्ड और ये वाला डालूंगी हॉट। सो ग्रीन चिली को भी हमने उसी तरह कर लेना है। हमारे साथ 5 फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरा हाथ सामने आता हो चॉप करते हुए आपके व्यू में तो मुझे बता दिया करें। आज हमारे उधर लहरी होती है, आज बाहर कब्रे हैं, 2 3 4 कब्रे हैं और वो कुछ खा भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई भी कर रहे हैं। माइल्ड जो चिलीज हैं वो तो 2 चलेंगी, लेकिन उसका लाइट जितना चिली का लाइट का कलर लाइट होता है उतनी वो माइल्ड होती है, जितना उसका रंग डार्क होता है उसमें हीट भी उतनी होती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। जब मैंने इस तरह की चीज़ बनानी होती है तो मैं लाइट कलर वाली पिक करती हूँ, जब मैंने सालन बनाना होता है तो मैं डार्क ग्रीन जो है ना उनको पिक करती हूँ। अभी वो बाहर वाले फ्रेंड्स हैं हमारे साथ, वो चैट में नहीं आते, इसलिए ये कहने का कि मैं मैसेज करते जाए कोई फ़ायदा नहीं, मैं अपनी एनर्जी भी नहीं वेस्ट कर रही और उनकी भी नहीं करूँगी। मुझे पता है वो हमारे साथ हैं, उधर ही हैं, जिसने मैसेज करना होगा जब उनका दिल करे आके मैसेज कर दीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा आप हमारे साथ हैं। वो भी हमारे साथ हैं, मिसेस जावेद ने लाइव ऑन की हुई है, साथ अपने काम कर रही हैं, साकी हमारे साथ हैं। एक सेकेंड जरा पानी पी। हर चीज को हमने बिल्कुल एकदम फाइन चॉप किया ताकि
कोई भी चीज़ जो चंकी जो है वो मुंह के अंदर नहीं आए। जिंजर, ग्रीन चिल्ली, onions, everything is finely chopped. Just gonna keep running because I don't want any big chunk of anything coming. But this is going to be a fine omelette that is going to cling to my paratha. Okay, I'll probably use a teaspoon of this and a little bit of the red. एक दफ़ा चॉपिंग का काम फिनिश, उसके बाद फिर पराठे बनाएंगे और साथ साथ ऑमलेट के साथ उनको दूसरे फ्राइंग पैन में एक तरफ पराठा बनाएंगे, एक तरफ ऑमलेट का मिक्सचर डाल के जो पराठा बनाया है वो उसके ऊपर रख देंगे, फिर उसको उधर से पका लेंगे. Now this one is a hot pepper. It's totally optional. You don't have to. You can see how fine that is. If you can see कितना छोटा उसको मैंने किया है. Thank you, Moby. Okay, ठीक है. अब इस पॉइंट पे I don't want to touch the pepper. Otherwise मेरा ही नुकसान होगा. Taking that away. जिसकी जरूरत नहीं उसको उठा लेते हैं. मैंने चॉप तो कर लिया है लेकिन मैं डालूंगी उतना स्लोली जितने की ज़रूरत होगी. तो इसलिए मैं उसको अलग रख रही हूँ, स्ट्रेट नहीं मैं उसको डाल रही है एग के अंदर. इंशाल्लाह जब वो टाइम आएगा तो फिर जितना हमें चाहिए होगा यहाँ से ले लेंगे. ठीक, थोड़ा सा मिक्स हो गया आपस में. दैट्स ओके, इतने की कोई बात नहीं. ठीक है, प्याज हो गया. मिर्च को अगर आप हाथ नहीं लगाएं तो अच्छी बात है. अगर आपको इफेक्ट नहीं करती तो गो अहेड. अगर करती है, मुझे इतना तो नहीं करती लेकिन मैं रेड वाली की वजह से एहतियात कर रही हूँ. एंड देन वी हैव जिंजर एंड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन धनिया भी होगा हमारे पास. थोड़े से फ्रेंड्स का वेट कर रही थी. अगर फ्रेंड्स नहीं आ रहे तो फिर ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. बस मैं धनिया भी साइड पे कर दूं. कोई भी you can have anything. You can have cilantro, you can have parsley, whatever is that you like. ये एक येलो लीफ नजर आ रहा है मुझे. come on. आपने नहीं अंदर जाना. मेरी शर्ट पे चला गया. ओके, ये 6 फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं मुझे. अगर आपको चैट में आना है प्लीज़ आ जाइए. अच्छा रहता है, ज़रा गपशप हो जाती है.
you very much for coming, friends. Thank you. Really appreciate that. इसकी कोई बात नहीं धनिया की, बिकॉज ये चंकी नहीं होगा। जो अनियन होता है या पेपर होती है वो बड़ा चंक अगर मुंह में आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए धनिया की कोई बात नहीं, आप उसको रफली चॉप कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स चैट में हैं वो मैसेज करते रहें। अभी भाई बिजी हैं। ओके जी, ठीक, बस अब काम शुरू। चलो, एक दफ़ा कटिंग और चॉपिंग एक साइड पे हो जाए फिर सब ठीक हो जाता है। मैं इसी के साइड पे जिंजर, लेट मी पुट द जिंजर ऑन द साइड। हर चीज़ को बहुत फाइन चॉप किया है इसमें हमने, एक्सेप्ट फॉर धनिया। साकी है हमारे साथ, ठीक है साकी भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी, अब मिक्सचर बनाते हैं अंडे का और फिर पराठे बनाते हैं। जब ये रोल बनेंगे आपको बहुत पसंद आएंगे, आई प्रॉमिस। और जी इसको मैं साइड पे कर दूँ और लैपटॉप को पास ले आऊँ, इसलिए मैं उसको साफ कर रही थी कटिंग बोर्ड को, क्योंकि वो मेरे लैपटॉप रखने के काम आता है। मुझे ज़्यादा दूर जाके मैसेजेस नहीं देखने पड़ते, मैं आपके साथ रहती हूँ फिर। लेकिन पिछले दिनों मैं कुछ पी रही थी और उसके ऊपर 2-4 कतरे गिर गए, जिसकी वजह से मैं बहुत एहतियात कर रही हूँ उसके साथ, तो इसने मुझे काफ़ी प्रॉब्लम दिया उस वजह से। शायद कीबोर्ड के ऊपर कुछ गिरा था। एनीवेज, ओके जी, सॉरी। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? अंडरवेयर। ओके, मैं स्पून ले आऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। एग्स को बीट कर लूँगी मैं। मेरा बीटर टूट गया है उसका हैंडल, लेकिन मैं फिर भी उसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं कोई ना कोई तरीका सोच के इसका हैंडल इसके ऊपर दोबारा लगा दूँगी। Until then, बस इसमें कोई लंप शम्प्स जो हैं वो ना रहे। इसमें हमने चीज़ नहीं डालना, इसमें दूध नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, क्योंकि ये वो मिक्सचर है जिसने क्लिंग करना है हमारे पराठे के साथ। बस काफ़ी है इतना। ओके जी, ये जो इसके साथ लगा हुआ है इसको मैं निकाल के साथ ही ले जाऊंगी। ओके, सिंक में रखें। ऑलराइट, where was I again? Let's do this. बहुत हैवी नहीं इसको बनाना, क्योंकि बहुत हैवी कर दिया ना, फ्लेवर बहुत अच्छा हो लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। उसमें प्याज डाला, मुझे लगता है कि 1 स्पून में ग्रीन पेपर का डालूंगी। देखा उसमें ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं एक और डालूंगी ना, 2 टेबलस्पून मैंने चॉप किए थे। सो लेट मी चेक द रेड पेपर, बिकॉज रेड पेपर इज़ रियली हॉट। फितना डालने वाली है ये, आग लगाने वाली सुरख मिर्च है ये, इसलिए इससे बच के रहना है हमने। थोड़ा सा डाला है 1 पीस। और फिर हमारे पास जिंजर है। जिंजर कोई नहीं, जिंजर से बहुत फ्रेशनेस आती है, वो मैं पूरा टेबलस्पून डाल दूंगी उसके अंदर। 5 एग्स थे और धनिया भी सारा जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उसको क्लिंग करने से रोके, ठीक है? ऑलराइट,
Black pepper use करूँगी. I'm using black pepper. I'm not going to use red chili powder, because we already have enough heat going on in here. अच्छा, ओके मम्मी भाई, ठीक है. जो फ्रेंड्स हमारे साथ में, तो इसको रिफ्रेश कर लूँ. एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश कर लूँ. ठीक. Salt and a little bit of black pepper. आप काम करो मम्मी भाई, फिक्र नहीं करो. मैं तो बस ऐसे ही कहती रहती हूँ, क्योंकि मुझे 6 फ्रेंड्स 7 फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं और चैट में नज़र नहीं आ रहा मैसेज. इसलिए मैं कह रही थी कि मैसेज करते थे. आपका तो मुझे पता है भाई, आप काम कर रहे हो. गो अहेड. जॉब से ज़्यादा तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. हम तो गपशप ही कर रहे हैं. ओके. ये जो न्यू सॉल्ट के डब्बे आते हैं, इनको जब खोलो तो वो अंदर से निकल जाता है उसका. ओके. हाफ ए टी स्पून मैं डाल रही हूँ. हाफ टी स्पून से ऊपर नहीं मैं डाल सकती, क्योंकि दिस सॉल्ट इन द डो, इन द रोटी डो. I cannot add too much of salt, but if you like a lot of salt, then go ahead and do so. मोबी को अच्छा लग रहा है. थैंक यू मोबी भाई. I'm going to look for black pepper. Just a little black pepper for flavor. Even the black pepper in my house is not too hot. So it's all good. We are ready with the mixture. So let's make some rolls. Let's take that away. Leftover peppers and onion, I will use them in the chutney. So I'll make a coriander and mint chutney later, inshallah. Let's wipe the counter, put that on the side. We are going to need butter. For inside the paratha, I use butter. For outside the paratha, I use oil. So I'm going to keep everything handy. As usual, मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ पे रखी हैं, और फिर मैं उनको ढूंढती रहती हूँ. बदल सकते हैं. We'll manage. मुझे छींक आ रही है. ओके जी. सो यहाँ पे काउंटर पे जगह बनाते हैं. अननेसेसरी चीज़ों को पीछे कर देंगे, या फिर मैं I can use the counter here to use the cutting board. हमारे साथ 7 फ्रेंड्स हैं. 7 फ्रेंड्स में से कुछ फ्रेंड्स आप चैट में आ जाइए प्लीज़. अच्छा लगेगा मुझे कि आप हमारे साथ हैं. थैंक यू गाइस. बहुत शुक्रिया आपके आने का. ओके. मैंने डो पहले ही बना के रख लिया था. बटर मैं इससे काटूंगी. जस्ट वांट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज रेडी बिफोर वी स्टार्ट. एक दफ़ा स्टार्ट किया फिर तो सब जल्दी जल्दी होता रहेगा काम. मूवी सोच रहे हैं. थैंक यू मूवी. साकी आपने मुझे पानी दिया. थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा वेदर चेंज है. एक फीवर की तरह हो जाता है जब ये मैं विंडो खोलती हूँ. विंडो ना खोलो तो इट्स टू हॉट इनसाइड.
किचन में, और अगर विंडो खोल दो तो फिर मुझे इस तरह होता है। So that's okay, that's my seasonal allergies. And now I need pushka. I think बांग्ला में पुष्का जो होता है वो उसको बोलते हैं वाइट राइस को, बॉइल्ड राइस को बोलते हैं, और हमारे पाकिस्तान में पुष्का बोलते हैं। इंटरनेशनल CCTV डे, yeah I think so, मुझे भी यही लग रहा है। कोई बात नहीं, मैंने तो रिक्वेस्ट की है, लेकिन अब उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं मानी, तो दैट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। मुझे तो खुशी है कि आप देख रहे हैं मेरे साथ, दैट्स ओके। जब वो कंफर्टेबल फील करें, हमारे साथ आना चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो अपना ब्रंच बनाना ही है। अगर आप हमारे साथ शामिल हो जाएंगे बहुत खुशी होगी, नहीं शामिल होंगे तभी हमें बहुत खुशी होगी। हम तो खुश हैं, खुश लोग। अच्छा जी, अब निकालते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा पराठा नहीं बनेगा, बहुत बड़ा पराठा नहीं बनेगा, यहाँ पे इतना पराठा बनेगा जो आराम से उसका एक रोल जो है अच्छा सा रोल बन जाए। टू हैवी होगा तो फिर वो सही नहीं रहेगा, टू छोटा होगा तब भी ठीक नहीं रहेगा। सो वी हैव टू टेक द enough atta for a medium size. Okay, 4 is enough. We have 4 people here, so we're just going to do the 4. Maybe वो देसी नाश्ता देख के उनको पसंद नहीं आया, that's okay. बच्चों को पसंद आता है ये, ठीक है। बनाने का मकसद ये है कि बच्चों को बहुत पसंद आता है जी। बच्चे चाहे किसी भी एज के हों, जिनको प्रॉब्लम होता है, आजकल बच्चों का मेन प्रॉब्लम क्या है, they don't want to they want to have the laptop or whatever device they're using right in front of them. They don't want to let go of that, and they want to eat, but they don't want to touch their food. So it's not just the kids, it's pretty much everybody now, even the biggest kids. फिर मैंने 2 years पहले ये देखा था और मुझे पसंद आया था, तो मैंने फिर उसको अपने मुताबिक बना लिया रेसिपी को। और मेरी मामा भी बनाती हैं उसके लिए, मेरे नेफ्यू के लिए, तो वो भी उसको ये बना के दिया करती थी। अब पता नहीं, मुझे लास्ट ईयर तो उसको पसंद आया था। What I'm trying to do is to finish as much as I can ahead of time. So we do both things. 2 frying pan रखूंगी मैं, एक के अंदर, एक पे वो फ्राइंग पैन नहीं, एक तो वो कैस्ट आयरन है तवा मेरा, उसके ऊपर पराठा बनेगा, और जो दूसरे फ्राइंग पैन में मैं ऐड करूंगी, एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, but I can do it in the same skillet. I don't even have to change it. Okay. If you don't want paratha, you can just go ahead and make a simple roti and cling the omelette to it, and you will be, you know, just as good as the paratha people. You don't like paratha, you don't have to have paratha. I think it's also a street food somewhere in India. I don't know about Pakistan, but I've seen in India this is also as a street food, Unda Paratha roll, right? I don't know about Pakistan. Let's move this now. We don't need it that much. My multitasking cutting board, it's big enough.
अरे वाह, फोल्ड हो रहा है। कभी कभी तो दिल करता है ना ओरिजिनल चीज़ें खाने को, लेकिन उसके अंदर भी मुझे ट्विस्ट डाल दूँ तो तब मुझे अच्छा लगता है। ओके, सीधा काम मुझसे नहीं होता भाई, क्या करूँ, मजबूरी है। हमारे साथ उनकी शुक्र आ गई हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। कुक एंड इंस्पायर इज विद अस। कुक एंड इंस्पायर शेफ, थैंक यू वेरी मच। In the mood today for a little bit of Indian Pakistani style food. So I'm going to make parathas and I'm going to try my best to glue the omelette to it and make a roll for the boys, because it's easier for them if you make a roll. I'm just going to spread the butter around. Inside the paratha I'm going to use butter, but outside I'm going to use oil or nothing. Okay, so just make sure the butter is not lumpy. It's on room temperature. Just press it down a little bit so you will not break the dough. And then I think, let me see if I'm not getting in the way. Just going to roll it. When I bring both hands here, I think I block your view. Just going to go like this, like this, like this, like this. Just keep rolling it. So at the same time, you are helping the butter, you know, pushing the butter into the dough, but not too much. You don't want it to break it. That's it. So when it's on room temperature, it's pretty good. Let me just take the rings off. Okay. Stretch it as much as you can without breaking it. Butter is on room temperature, so it's not going to break the dough, break the layer or whatever. Okay, so just roll it, roll it, roll it, roll it, push it in. Okay, let's do the same. Hello everyone and good evening. Thank you very much, Chef. And Moby saying looks perfect. Thank you, Moby. You can do it with your hand. If you're comfortable doing it with your hand, go ahead. But for me, I want it thin, so I'm using the rolling pin. Same thing we are going to do, very thinly slice the room temperature butter, very thinly. If it's not, if it's a little bit chunky, it's going to come out of the, okay, that's enough. It's going to break the layer. I don't know if I'm explaining myself properly or not. Just make sure the butter is nice and soft. It has to be butter inside. If you use oil, it's good too, if you are not a butter fan, but I think butter is much better. Makes the paratha very nice and crispy. With your thumb, just keep pushing it, bringing it together. This way you are also helping the butter melt even more and shape with the dough. As many layers you can make, because those layers are going to get nice and crispy. Then with your hand, just keep stretching it. I'm not looking at the chat. I'll be right there, guys.
I don't think there are too many people in the chat today, so that's okay. As long as they're watching, I'm happy they are here. So when you make the snake, you go ahead and you roll it, coil it on your hand until you see the layers now. Well, that's how I grew up. That's how my mom was making them. But there's so many other ways. Sometimes we'll do the others too. Everybody makes paratha differently. Some people do it with their hand and they just push the butter in and they roll it and they do it. They are the experts. I'm not expert. I just do whatever is that works for me. If you see Pakistani people, Indian people making parathas, you will be surprised how many ways and how fast they can do it. Because this is a regular breakfast in those countries. My cutting board is making noise. That's a little bit annoying. Okay. Am I boring everybody? That's okay. That's fine. Friends, thank you very much for coming. Thank you very much for watching. Jazakallah khair. I'm very grateful that you are keeping my live stream on. Thank you very much guys. बहुत शुक्रिया आपका. आप देख रहे हैं, आपने लाइव को ऑन रखा हुआ है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. One more and then we will start. It's getting windy outside. Nice. As long as wind is not blowing this way, I'm good. If I'm doing it off the camera, I will do it very fast too. Because in the camera, I cannot do it the way I do it. Fast, and let's get over with it. So I'm taking my time. Just in case someone is new to what paratha is. So I don't want to go too fast and just, show off. That's not good. So I'm trying to go step by step. But those rolls are going to be worth it because it's for the people who do not want to touch a greasy surface or a crummy surface. That's why I'm doing this with one hand. It's not one hand. Usually it's both my hands and I go fast. Because I'm making parathas from 30 something years, probably more. Since I was very young. I remember I used to have my mom. She taught me how to do it. Since then I'm doing it the same exact way that she taught me, and if she's watching, she knows. I cannot make a sola tahi paratha, but I can do a simple paratha. 16 layers is too much for me, so whatever layers I can come up with. Alright guys. साकी है हमारे साथ, मूवी हैं और बाकी लोग भी हैं, सब फ्रेंड्स हैं हमारे साथ. Thank you very much friends. You are still here and you're still watching. I appreciate that. So after coiling it, we are flattening it up again. Once I'm done with this thing, it's going to be so easy. Usually when you have daughters in the house, I only have sons. When you have daughters usually help the mothers do that. They make the balls, and the mothers, they can just fry the parathas, and it's a teamwork. And it goes very fast.
So I have boys, and if I tell them to come and help me, they will make so much mess that I will have to clean up afterwards. So not talking about movie. I'm talking about my kids who are messy boys, but Moby is a very good chef. I'm not talking about generally about all boys. Just talking about mine. That if I ask them to help, I would regret my decision. Alrighty. So when we are ready, our cast iron is ready. I'm just going to roll it and I'm going to start. So let's go turn the heat on. Let me wash my hands. A lot of stuff is sticking to it. I'm happy this thing is out of the way, so let me dry my hands because I'm going to need dry hands to pick up that paratha. I don't want to make too much mess. और अब तो शुरू का मैसेज नाइट बॉट ने डिलीट कर दिया. प्लीज डोंट यूज टू मैनी इमोजीज. अच्छा वो टू मैनी इमोजीज यूज करने थे. सॉरी मामा. I'm really sorry about Nightbot. He always does that. Nightbot बड़ा बदतमीज बच्चा है. वो जब ज़्यादा इमोजीज डालते हैं तो वो पसंद नहीं करता, तो वो आके वार्निंग देने लग जाता है. सॉरी अबाउट दैट. उसको पता होता मेरी मामा है तो वो कभी ऐसे नहीं करता है. सॉरी. गंदा बच्चा. मूवी देखो. मामा को उसने की है. नाइटबॉट ने तंग की है. अच्छा वो आपने 5 डाल दिए थे ना, इसलिए आपके 4 डाले और आपने फिर एक थम्स अप दिया, वो 5 हो गए. इस वजह से नाइटबॉट ने आपको कहा है कि इतने ज़्यादा इमोजीज जो हैं उनको यूज़ ना करें. ऑलराइट, लेट्स टर्न दिस ऑन. ओके, ये ऑन हो गया. और चाय का भी ऑन कर देते हैं. उधर पीछे रख देते हैं चाय. नीचे नहीं, इधर ही रहने देते हैं. ओके. As long as it's not getting in my way, I'm fine with it. ये उठा लेते हैं यहाँ से. मैं लैपटॉप अपने पास ले आती हूँ. सैम भी आ गई हैं हमारे साथ. वेलकम कह रहे हैं मोबी. थैंक यू सैम जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का. जितनी देर तवा गर्म हो रहा है, लेट्स डू दिस. लेट्स जस्ट गो अहेड एंड स्ट्रेच दिस आउट. Not too big and not too small. Not too thick and not too thin. बस बिल्कुल उसको ऐसा होना चाहिए कि वो because we have to add a layer of egg to it. We don't want it too thick, otherwise it's not going to be pleasant. Now we have our buttery paratha ready, and we have the mixture ready too. So like I said, I need the butter in my inside my dough, but I don't want the butter outside of my dough. So for that purpose, I'm going to use some oil, if I needed any.
लाहौर वन आ गई हैं और आयशा आ गई हैं हमारे साथ। थैंक यू वन, थैंक यू लाहौर जी, लाहौरी, लाहौर वन पाकिस्तान। आप बहुत दिनों के बाद आए हैं भाई। होस्ट क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। देखें आप इतने दिन के बाद आए हैं हमारे पास। आयशा जी आ गई हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। और सैम भी हमारे साथ हैं। ठीक है जी। हेलो टू यू एज वेल। आज मैं ऐसा पराठा बना रही हूँ कि जो रोल बना के बगैर हाथ लगाए बच्चे खा सकते हैं। When I say बच्चे, I mean those young men that I have here. They're not exactly बच्चे, but okay. Let's go. Come over here. जहाँ पे हम ये करने लगे हैं। Let's see. पहले पराठा बनाऊंगी मैं, और जब पराठा डन हो जाएगा तो मैंने नीचे अंडा डाल के उसके ऊपर पराठा डाल देना है। So that's 2 in 1 and then we will roll them. और फिर उसको पेपर में लपेट देंगे तो पे की ईटर्स जो हैं वो खा लेंगे। आयशा जी, मिसेस जावेद जो हैं वो भी यहीं पे हैं, अपने कामों में लगी हुई हैं। एक्टिव लर्नर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्टिव लर्नर, थैंक यू फॉर कमिंग। लाहौर वन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। आयशा जी, यू नो यू आर ऑलवेज वेलकम हियर, राइट? जी देसी नाश्ता हो रहा है भाई, और देसी नाश्ते को थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं हम उसका रोल बनाएंगे ताकि जो नखरे करने वाले लोग हैं उनके हाथों को कुछ ना लगे। और अब मैं अपनी टेबल भी इधर ले आती हूँ। आज मैंने टेबल हटा दी थी, लेकिन अब उसकी जरूरत पड़ेगी। आज मुझे मूव अराउंड करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए थी, तो मैंने वहाँ से टेबल हटा दिया और मैं आराम से मूव कर रही थी। But it's time to bring it back. Okay जी। हमने एग का मिक्सचर बनाया है बहुत फाइन। उसमें काट के डाली हैं सारी चीज़ें। जिनको अंडा पराठा खाने का अच्छा लगता है, शौक है, उनको हम थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ आज बना के देंगे। वेरी वेरी फाइनली chopped peppers and onion and ginger and धनिया। So ginger is makes it very fresh. अगर आपको जिंजर पसंद नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जब आप ऑमलेट में खाएंगे तो आप ज़रूर उसकी तारीफ़ करेंगे, बिकॉज वो बहुत ही फ्रेशनेस उसको दे देता है। ठीक है, और ये ज़रा पराठा जो है बन जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। मैं ज़रा सब कुछ करीब करीब ले आऊँ टेबल पे ताकि हम रेडी हो जाएं। ओके गाइस, हमारे साथ 12 फ्रेंड्स हैं और थोड़े से फ्रेंड्स हैं। सुपर क्वीन भी आ गई हैं। सुपर क्वीन जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मिसेस जावेद भी आ गई हैं, थैंक यू। मिसेस जावेद पास पास ही होती हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाती, मुझे पता है। मैं तो हाथ से इसको पलटाती हूँ। आई यूज माई हैंड, बट इफ यू गाइज आर नॉट कंफर्टेबल, नेवर ट्राई यूजिंग योर हैंड। यू कैन ऑलवेज यूज द, who am I talking to? I don't even have the camera here, और मैं आपसे बातें कर रही थी इसके बारे में। अच्छा, सो इस तरह का हो गया ना। अब ये तो इसको मैं बस ज़रा सा ऑयल लगाने लगी हूँ। अगर ना भी लगाऊँ इसमें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने एग लगाना है इसके साथ। मैं एक साइड पे लगा रही हूँ, दूसरी साइड पे मैंने एग लगाना है। अंदर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया उसको ग्लेज देने के लिए।
Mobi bhai, welcome. All कह रहे हैं सबको. Pink is here. Pink, hello, 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 and welcome, welcome. Thank you very much. You're joining us for the brunch today. We skipped the breakfast, so I'm making the Indian Pakistani breakfast. It's a crispy bread. We call it bread, roti, paratha, and it's buttery and flaky. But I'm going to glue the egg on this side, the omelette egg. So we're gonna make a nice yummy roll. Um, yeah, Pink Sam. Sam is a supporter. She is here always to support me, but I don't think she has a channel yet. I hope one day she does. But Sam is here for support. Super Queen is here. Aisha is here. Mrs. Javed is here. Mrs. Javed. पिंक आई हैं. अगर आपने उनको फ्रेंड बनाना है तो आप बना लेना. And friends, don't forget to leave a message in the community. Okay, guys. So at this point, one side is done, right? See, I didn't put too much butter. It's just nice and flaky because there's butter inside. So let me take it off for a minute. Going to going to add some oil. Let me grab something in my hand. It's hot. Okay. So just gonna do this. If you don't want your omelette to stick to the pan, just make sure you have enough oil in there. Maybe I put a little too much. So I'm going to drop the egg in it. Let's do it this way. You guys just see what happened? I glued the omelette to one side of the paratha. Sam कह रही है माशाल्लाह जबरदस्त. Pink is saying looks good, cute. Thank you very much, Pink. I appreciate that. Sorry, I'm late. That's okay. That's okay. I just made the dough and I made the omelette mixture. That is buttery dough ready over there. That's what I flattened and I made this paratha and just added the mixture down to it. It's actually pretty easy. See how it's cooking? So all we have to do is to roll it, cut it from the middle like we make all the rolls. I'm gonna let it get a little fluffy. But I'm keeping this side now a little bit less. Okay. Let's check on it. It's pretty good. The omelette is part of the crispy paratha. Going to flatten this one. I just added butter in the dough and I rolled it. Now I'm stretching it again. This is what makes it crispy. Just like the pastries we make, it becomes very flaky. Let's take this one and take that one off. This one is ready to go. That one is ready to get off. I'm going to let it cool down a little bit. So now we don't have a problem of picky eaters saying they have to touch the paratha and it's greasy. So let's do this.
And I actually find a masala tea in the market. The Tetley brand is making the masala tea, so I'm gonna have a nice chai with it. Saki को मजा आ रहा है, मोबी भी खुश हो रहे हैं, active learner is happy too. Tishukur is giving thumbs up. Thank you guys, thank you very much. So now this is where my omelette is. It's not here, it's not here. Okay? It's not here and it's not here. It's in the middle. So you see how, okay, I have to bring the camera closer to show you how crispy and flaky this is. All right, let's do this 1 second. Okay, so I have to roll it. It's so flaky that it's falling apart in my hands. I'm just going to roll it. I don't know if you can hear the crunch of the crisp. Okay, so that's number one. Let's sit there. Then I'm going to cut it from the middle. And that is such a delicious breakfast or brunch that, I don't know. If you eat it fresh, it's the best. सुपर क्वीन भी खुश हो रही हैं, हम तो शुक्र भी थम्स अप दे रही है. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. आपने मेरी ज्वेलरी देखी? ये देखिए, मैंने खुद बनाई है. I made it myself. Seriously, I made it myself, and this weekend I'm planning to show you guys how I did it and from what I made it from. It's so light, it's light like a feather, and it's recycled. So I'm gonna let you guys guess until I make it for you on the weekend. I'm planning to add a video on the weekend. ये देखो, ये मैंने बनाई थी, मुझे अच्छी लगती है. It's very light, it's not heavy. So if everything goes well, inshallah, on this weekend, I will show you guys how to do this. I don't know if I'll do it live or not. Okay. This is the side that I'm going to glue the egg. This is the side that's going to be outside. So just a few drops, not too much, just a few drops for glaze. I can smell the chai, the masala chai, smelling the cardamom and the cinnamon in it. It's very good. They came up with this Tetley company, the Tetley brand. They came up with it. Super Queen, very good. Pink said, oh wow, I love it. Beautiful pink. I wish I could feed you. I wish you could make it here so I can make some things for you. But you guys are so far away. But I'm so far away from you guys. मिसेस जावेद कह रही हैं माशाल्लाह जमी. मिसेस जावेद, जब बच्चे खाएंगे ना बहुत बहुत मजे से एंजॉय करेंगे. उनके बच्चों का तो मजा हो जाता है ना. Okay, let's cut that roll and start plating it for you guys while the other paratha is cooking. Let me see if I have a proper knife. Let me use my Daily Pro. If I can cut it, bismillah. Alright, make sure it's nice and tight before you start cutting it. Cut it from the middle. I think I have a video. And when I'm done with the live, I'm going to go look for it. I have a video. I made it sometime last year. So you don't have an omelette falling out of the paratha. Okay, this side is done. Perfect. Perfect, perfect. So let me take that out now because we are going to do the same thing. It's so crunchy. It's just so crunchy. Why? Because I have butter inside the dough. So just like the pastry. You guys, let's do this one more time. What is that? Let me take that off the pan.
the little crispy dough. Okay. Spoon of oil. Just make sure it's rolled around in the pan. Okay. I'm going to bring the egg same way. And I'm going to try to keep it in the middle. This side is much better. Let's okay, let's check it. Let it cook from the bottom. It's cooking nicely. Let it cook. I turned down. मैंने आग ऐसा कर दिया. Turn it down a little bit. I don't want my omelette to burn. This is 2-in-1 deal. You get your crispy paratha, and you also, oh my god, look at the flake coming off. Oh, it's mine. You see the layers? You see the crispy layers? Okay, that's what we are looking for. Okay, let's see. We will roll from this side to this side. This side, यहाँ पे नहीं है, it's in the middle. A little bit came on this side, but that's okay. So we're ready for it. Once it's cooked nicely, just give me 1 second. Let me bring one more paratha here. I'm not sure, but maybe Indian restaurants they serve the Unda Paratha roll. I'm not sure because it's Indian street food. Sorry, I have to pull my sleeves up. They're catching the butter. Okay. So mashallah कह रही हैं. Okay. What's in the egg mixture, Pink? I'm sorry, I was over there. Okay. What is in the egg mixture is very, very finely chopped onions, chili, green chili, a little piece of habanero pepper, and cilantro, salt, and a little bit of black pepper. It's optional. The hot peppers are optional. You can just go with the black pepper. Okay, let's come over here. Let's see what we're gonna do with this one. Going to start rolling from this side because we have more egg on this side, and then make sure it's nice and tight. It's crispy. I don't know if you can see, it's falling apart. My light is what you guys see is different than what I see. So sometimes I imagine that you're looking at the same thing. Okay, let it sit here for a few seconds. Let's see what I can do with this. If I can
roll it up for the boys. A little bit out. This much out. Let's just hold it. My hands are slippery right now. Just something for them to hold it, so they can easily grab it and eat it. So I have the wax paper. You can use the paper towel. I should need to roll it a little better than this. Okay, let me check on the paratha. This one is coming out nicely too. Let's wrap all of them with my wrapping paper. I seem to have lost it. Okay, I will check it later. This is nice. Like I say, you guys don't have to use your hand. I'm so used to it, I forget that I'm on the camera and I start touching it without the tongue or chimta. We call it chimta. Okay. साकी है हमारे साथ, मोबिस किचन है, एक्टिव लर्नर नाइस कह रहे हैं, सुपर क्वीन माशाल्लाह कह रही हैं, वाह कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। लाहौर भाई, लाहौर वन भाई आप चले गए, मैंने समझा था आप नाश्ता करने आए हैं देसी। मैं कहाँ चीजें रख के भूल जाती हूँ। अभी मेरे पास वैक्स पेपर का रोल था और वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। Anyways. किसी भी एज के बच्चे बड़े जो हैं जिनको हर वक्त अपने हाथों का फिक्र होता है, this is good for them. I will keep piling them up for you guys here so you can see how it goes. It's just 2 in 1 deal. This is nice and crispy. So, and this side is good too. So this is the front and this is the back side. Let me take it off because it's time to glue some egg to it. It sounds funny for me to saying let's glue the egg to it. You see my oven mitt is all the way up there, all the way there. And I'm not going to go all the way up there to get it, so I'm just using paper towel. I'm not that careless, guys. If you see me using paper towel, don't think I'm careless. It's just too far away. I was cleaning the stove, so I hang them over there. Here comes the egg mixture and my paratha. And yes, pink. Sorry, I forgot. I also have little fresh ginger in it. How me eat is here. Hello, chef. How are you? Thank you very much. Welcome. Thank you for coming. Today we are having a brunch that's Indian Pakistani paratha with a twist. I'm gluing some omelette to it to make a roll. How are you doing, chef? Super Queen, good vibes दे रही हैं. Hello, host कह रहे हैं how me eats, and I think Moby is here too. Thank you, Moby, for being here. Let's check on it. It's too flaky from this side. Okay. Okay, guys, you see the omelette, how nicely it's cooked. I twisted the paratha around, so that made a pattern on it, and it's nicely cooked from that side. My chai is done too, I think.
Moby is saying hello to Chef How Me Eats, and that's a beautiful channel, guys. He is a very organized, a very beautiful channel, and he's amazing chef. And if you want to make friends with him, you guys can go ahead and do so. If Chef How Me Eats, if you can leave a message on my community under my latest post, all those friends in the chat, they want to make friends with you, they can pick you up from there. It's just on the community under my latest post. I know I'm asking you a favor. If you are still here, you can do that, or the friends can just search you out. There is our nice and crispy. Another one of our parathas done. I have one more left, so just give me a second. Once I'm done with this, then I will roll them. Let me just get this out of my way. Just stretch it with your palms like you do with the pizza dough when you're making pizza. The only thing is this is crispy and it's buttery and it's going to turn flaky. Friends, if you have not given me thumbs up yet, you can give me a little gift of that. You can just thumbs up my live stream, so I will know that you guys were happy. Let's make more here. Okay. Let me wash my hands because I'm not stretching any dough anymore. Alright, Moby. कोटला फूड आ गए हैं हमारे साथ. कोटला फूड हाई कह रहे हैं. Hello back to you as well. Thank you very much. Welcome. Thank you for coming. We are good. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. आप कैसे हैं? हम आज ये चक्कर चला रहे हैं. अंडे पराठे का रोल बना रहे हैं. We are making the अंडा पराठा रोल, जिसमें अंडा जो है वो ग्लू कर दिया पराठे के साथ, जिस तरह स्ट्रीट फूड स्टाइल होता है उस तरह हमने बनाया. अब इसको रोल कर लेंगे. क्रिस्पी पराठे हैं और हम उनके रोल्स बना रहे हैं. ठीक. और आप कैसे हैं, आप भी बताएं. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के. आपने लंच में हमें ज्वाइन कर लिया. लंच कह लें या ब्रंच कह लें, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट स्किप किया था. मोबी भाई और साकी हमारे साथ हैं. वेलकम. हुलूल को कह रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे पास, तो आप प्लीज़ कम्युनिटी पे मैसेज कर दीजिए, सो वी कैन गो टू योर होम आफ्टरवर्ड्स. हम आपकी तरफ आएंगे. अगर आपकी न्यू वीडियोस हैं तो हम वो वॉच करेंगे. अगर आप ओल्ड फ्रेंड हैं, अगर आप न्यू फ्रेंड हैं, तो हम आपको पता है जो डील होती है इंशाल्लाह ताला. लेकिन लाइव के बाद मोबी, साकी और मैं, हम तीनों इस वक्त बहुत बिजी हैं. मैं खाना बना रही हूँ. मोबी अपने जॉब से हमें थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं. कहना नहीं चाहिए था मुझे, सॉरी मोबी. वो भी अपना लंच आवर हमारे साथ गुजार रहे हैं. आप सुनाएं कैसा जा रहा है सब कुछ. कोटला बिस्मिल्लाह. इसको रोल करके. आज हमारा देसी नाश्ते का मूड था. बहुत ही क्रिस्पी पराठे बने हैं, बहुत ही मज़े के. ये उन लोगों के लिए बनाए हैं मैंने जिनके हाथ गंदे होते हैं और वो नहीं चाहते कि वो रोटी को या पराठे को टच करे और उनके हाथों पे जो फ्लेक्स हैं वो लगे.
हम्म, अच्छा लॉन्ग दिखाएगा yummy food carrying Gulul. I'm making dal chawal. Okay, Gulul, I'm very happy you're doing that. सुपर क्वीन भी हमारे साथ हैं. हलवा पका है. अच्छा जी. यस यू आर माय ओल्ड वर्ल्ड. हाँ जी बिल्कुल. लेकिन आप अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम हैं या नहीं भी हैं तब भी प्लीज़ मुझे थोड़ी सी फेवर करके मेरी कम्युनिटी पे मैसेज छोड़ दें ताकि मैं आपकी तरफ आ सकूँ. इस तरह मुझे याद भी रहता है कि मेरे साथ कौन से फ्रेंड्स थे. और फिर मैं शाम को जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सबकी तरफ आती हूँ बारी बारी. कोशिश मेरी पूरी होती है ताकि मुझसे मेरे से अगर आपको थोड़ा सा वॉच टाइम मिल सकता है तो वो मैं आपकी वीडियोस देख के आपको दे देती हूँ. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ओल्ड हैं या न्यू हैं. हमें तो खुशी उतनी होती है ना. हाँ आप हमारी लाइव में कमाए हैं इसलिए मैंने बोला था. बस हम इसको भी ये पराठा दिस वन इज़ डन फ्रॉम दिस साइड and I'm not putting too much oil on this side and this is the side I'm going to glue. So इसको निकाल लेती हूँ मैं. बिल्कुल स्ट्रीट फूड वाला काम चल रहा है हमारा आज. Let's turn that because दोनों साइड को पकी होनी चाहिए. इसके मैंने अंदर बटर लगा के अच्छा सा उसको फ्लेकी कर लिया. देखें कैसा फ्लेकी है. जब मैं उसको रोल करती हूँ तो वो फ्लेक्स टूटते हैं उसके. बहुत मज़ा आ रहा है. Thank you friends. Thank you all friends for coming and for staying and for giving me thumbs up. Really appreciate that. Let's take that off and do the same thing we've been doing lately. Let's turn the heat down so we don't burn our omelette. Drop a spoon or a spoon and a half of oil because it's going to go around. Anytime I want to do the omelette part, I turn the heat down first and then slowly I turn it up again. So what I'm going to do is to make sure my pan is coated properly, my cast iron. I don't want my egg to glue to that. So bringing out the mixture, egg mixture. There's a little bit left. I made for 4. I have 5 eggs and made for 4 parathas. So I'm going to pick up some egg in this. So one more time, just make sure the oil is equally distributed on the pan. Just going to drop this in the middle. मोबी हमारे साथ हैं. सुपर क्वीन हमारे साथ हैं. Thank you very much guys. Really appreciate you being here. Thank you very much. I made sure the parathas are not too heavy. Thin paratha hai. Not too thin ke toot jaye, but it's thin enough to hold the egg as a layer and not so we don't feel too heavy. So let that cook. If you guys can see the flakes just flaking. The flakes are flaking. It's so nice and crispy. The flakes are flaking. Sorry. I'm just so happy, so excited about it. So let me put the camera back on the stand. Okay. We don't do unda paratha that much, but once in a while, every once in a while we enjoy it. I'm checking the salt and pepper in the omelette mixture. It's pretty good. It's decent. It's not too salty and it's not too hot. But I have the kick from the fresh ginger and the green chilies. It's very good. That's what is going to make the paratha so good. The fresh ginger, onion, and the green chilies.
See how it's blowing from here because the egg is cooking. How me eat is saying I'm okay. Glad to hear that. This is good. Sorry, I had to taste it, guys. Let's check on the omelette. Nicely cooked and good. Perfect. Let's give it a few seconds here and we're done with it. And so is the tea. The tea is done too. Nice. Okay. शगुफ्ता's क्रिएशन आई है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. शगुफ्ता जी कैसी हैं आप आज? Thank you. Jazakallah for that. Jazakallah for that. आपको तो पता है मैं कहती नहीं होती, कभी कभी बोलती हूँ. नहीं तो आप लोग अपनी खुशी से आते हैं, अपनी खुशी से थम्स अप देते हैं. मैं इतना कहती हूँ कि कम्युनिटी पे मैसेज छोड़ दें ताकि मुझे याद रहे कि आप मेरे पास आए थे. तो जब मैं शाम को अपनी चाय लेके बैठती हूँ, लैपटॉप पे बैठती हूँ, तो फिर मैं आप सबकी तरफ बारी बारी आती हूँ. मेरी कोशिश यही होती है अनलेस के कोई इमरजेंसी मुझे बाहर जाना पड़ जाए. अदरवाइज मेरी शाम जो होती है वो आप लोगों के लिए होती है. चलें जी, ये भी बन गया. अब आते हैं टेबल की तरफ जहाँ पे हमारे रोल बन गए हैं और लास्ट वाला बनाने वाली हूँ मैं. सो गैस टाइम को जरा साइड पे कर दूँ ताकि मुझे नहीं लगे. ओके. ओके जी. Push the stuff away and then you have my attention. जितनी देर मैं खाना पका रही होती हूँ उतनी देर तक मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ मुझसे मिस ना हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है. I'm sorry about that, guys. It's not intentional. शुद्ध पूछे हैं how are you. गदेजी भाई आए हैं. गदेजी भाई अस्सलाम वालेकुम. Pink motivation. She's still with us. I can smell the amazing food over here. Uh, the ginger and the pepper and the onion, oh my god, it's just so good. I don't know how to explain it. One of my cousins used fresh ginger in her omelette, and since then, that was like, let's say 20 something, 25, 26 years ago, I tasted that omelette and it's just stayed with me, that taste. I love it. But you have to very, very finely mince fresh ginger, finely minced onions, and finely minced green peppers. And then anything extra besides salt and black pepper you can use. You can make your omelette. If you don't have the dough, if you don't have it, just do the same thing with the bread. With the bakery bread or with the sliced bread will be much better. So गदेजी भाई कैसे हैं आप? फूड मेरे लिए रखा है होस्ट जी. बिल्कुल, आप भी आ जाएं. देखें मैंने कितने सारे रोल बनाए हैं. रोल इसलिए बनाए हैं कि जो लोग हमारे घर में नखरे करते हैं कि हमने पराठे को हाथ नहीं लगाना, वो उसके फ्लेक्स लगते हैं हाथों पे और ग्रीस लगती है एंड व्हाटएवर, उनकी डिमांड पूरी करने के लिए. ये इतना फ्लेकी है कि ये मेरे हाथ से अब टूट रहा है. आई एम गोइंग टू लेट इट कूल डाउन लिटिल बिट before I cut it. So just give me 1 second. I have misplaced something. Let me just look for it. I'm right here. Found it. I was looking for my wax paper because I'm going to roll them up. So when I serve them, I'm just going to hand them each two of them, two half pieces rolled up, so they can easily manage to eat that.
Oh my goodness, smells good. Sorry. Just gonna roll this one again because it's a little lumpy from the. लीजिए. I'm pretty sure I have seen this in Indian street food. I'm not sure about Pakistan, but in Indian street जैसे भाई कह रहे हैं ये कल से जुबान बोल रही है बहुत. मैं उर्दू इंग्लिश मिली जुली बोल रही हूँ जी, क्या करूँ. मेरे पास इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, मेरे पास उर्दू वाले भी हैं, फिर मैं सबके खुश करने के चक्कर में कभी इंग्लिश से स्विच उर्दू में, कभी उर्दू से इंग्लिश में, दरमियान में कहीं कहीं पंजाबी भी लग जाती है. मेरे पास सब आएंगे ना. मेरे पास पिंक है, पिंक को भी समझा रही हूँ. उनको अच्छा लगा है हमारा खाना. सुपर कोइन जो है पिंक कह रही हैं, शुगुफ्ता's creation, yes it looks so good. That's a compliment coming from Pink. And she's agreeing with Shugufta. Welcome Shugufta creation कह रहे हैं. And the Desi Tech Mobi कह रहे हैं. Mobi ने welcome किया है आपको. Thank you Mobi for doing that for me. Thank you for joining कह रहे हैं. That's very good. Thank you guys. Thank you guys. Let me make some tea. I have the masala tea like I told you guys. Let's grab some plates. Sorry. Super Queen कह रही हैं perfect. And Saki कह रही हैं Shugufta जी. And my pleasure कह रही हैं Shugufta's creation. अब मैं देखती हूँ कि मैं जो आपको वैक्स पेपर का बता रही थी. Let me go with the wax paper. I think I need to cut out a small piece like this size. So how I'm going to serve it is what I'm going to show you. हमारे साथ जो फ्रेंड्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी देर तक मेरे साथ रहे. आई रियली अप्रिशिएट दैट गाइस. हम तो शुक्र करिए. गुड जॉब माशाल्लाह. 14 फ्रेंड्स हैं हमारे साथ. 14 फ्रेंड्स. हर फ्रेंड का बहुत 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 शुक्रिया मेरे दिल से. From the bottom of my heart. I'm just going to hold it here. I'm just going to just roll it out in a way that they can hold it and not feel like, just roll it any way you want. So जब वो इस तरह पकड़ के खाएंगे तो उनके हाथों को नहीं लगेगा. जब हाथों को नहीं लगेगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. So the thing is, because it's flaky and sometimes some of the picky eaters, they don't want to touch the paratha. We Desis, we don't mind. From where I'm coming from, I don't mind. I eat, I enjoy my paratha, then I go, I wash my hands. But the new generation and some of the older picky eaters, I have a brother who has the same problem. Not this one. There's another one. He will rather not eat the food, than because he doesn't want to touch it. Just because he doesn't want to touch the flaky or the crumbs or something like that, so he will pass on that food. So that's the best way to go. You just make the roll and you serve it like that. क्या ख्याल है? हाँ, सैम कह रही है मज़ा तो अब आएगा खाने का. जी बिल्कुल जी. जलेबी भाई कह रहे हैं कि मैं रास्ता तो नहीं भूल गया. आप रास्ता नहीं भूले, आप सही जगह पे आ गए. आ जाइए. चाय और अंडा पराठा है. और क्या चाहिए? बिस्मिल्लाह. हमारी चाय भी बन गई है. हमारी चाय स्पाइसी चाय
that I'm using these days. This comes from the Tetley company, the Tetley brand. They are making a masala chai. I didn't know about it. My husband found out and he brought it. And since then, I'm just enjoying it. It's cinnamon and it's cardamom, elaichi, darchini, and few more spices in there. And for breakfast, I like it very much. Honestly, I like a little bit of spicy chai sometimes. I'm mostly a coffee person, but sometimes, you know, there you go, another wrap. I'm making half, so if somebody is not interested in the whole, they can just eat half and then they can grab another half. And my laptop is still giving me hard time. Oh, I have to refresh this. I'm sorry guys, just give me a second. I have to fix this, the laptop on the weekend too, inshallah. हाँ जी, क्या ख्याल है आप लोगों को, कैसा लग रहा है ये नाश्ता? मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि देसी नाश्ता अंडा पराठा विद अ ट्विस्ट. So that was the twist. The twist was the twist. अंडे को उसके ऊपर डला दिया है हमने और हमने उसको स्ट्रीट फूड में बना दिया है. स्ट्रीट फूड की तरह खाएंगे बच्चे और खुश होंगे. And they are not that much बच्चे. हम खाएंगे. इतने बच्चे नहीं हैं, लेकिन खाने में उनके नखरे बच्चों वाले हैं. मेरा जो छोटे वाला 20 साल का हो गया, लेकिन जब उसको मैं अंडा पराठा देती हूँ, मज़ा भी आ रहा होगा तो वो नहीं खाता, छोड़ देता दरमियान में कि मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो मसला हल करें. फिर मैंने few years ago I saw a video, Indian street food or something, I cannot exactly remember. तो मैंने वो वीडियो देखा, उससे मुझे ये आइडिया आया कि इस तरह हम कर सकते हैं और ये मसला भी हल हो जाएगा पिकी ईटर्स का, राइट. अब वो फैंसी का फैंसी हो गया और मज़े का मज़ा. अच्छा जी, Hami Eat is saying I'm still here. Thank you, chef. Thank you for still being here. I really appreciate that. I hope you like what you see here. I think they make anda parathas in the Indian restaurants, but I don't know if they do it this way. They do it in India. I'm pretty sure that this is where I got the idea from. It's very delicious breakfast for the weekends, but I'm doing it today because tomorrow I feel like baking something. Because Friday is a cheat day. Remember, guys? Friday is a cheat day. So I'm thinking about baking something yummy, yummy, meetha, meetha. I don't know yet what. I'm not sure. Because I'm going to have enough leftovers. So I can afford to go ahead and cheat a little bit. खुद ही खा रही हैं. मैं क्या करूं भाई, अब मैं क्या करूं. इसीलिए तो आपको आसान रेसिपीज बताती हूँ कि अगर आपको अच्छी लगे तो आप खुद भी बना लें. अंडा पराठा तो सब लोग बना लेते हैं. अंडे को पराठे के साथ चिपका दें तो रोल बन जाएगा. इंग्रेडिएंट्स मैंने यमी वाले आपको बता दिए हैं. प्याज, अदरक, हरी मिर्चें बहुत फाइन चॉप करके आप उसमें डालें और फिर उसका मिक्सचर बनाएं. मोटा मोटा मिक्सचर नहीं, बहुत फाइन वाला मिक्सचर. और उसके बाद आप उसको कभी तो इसी तरह बना लें या आप बनवा लें. आप तो अगर पाकिस्तान वाले बहन भाई जो हैं वो तो बनवा सकते हैं इजीली. असल में तो हम यहाँ वाले हैं ना बेचारे. और मोबी भाई बहुत खुश हो रहे हैं मोबी भाई, क्या हुआ? आप भी आ जाओ मोबी भाई, आप आ जाओ या बना लेना वीकेंड पे. काश के इंटरनेट पे भी मैं खिला सकती. मुझे तो भाइयों को बहनों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काश मैं खिला सकती.
गरम गरम अंडा पराठा रोल्स आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप बनाइए, खाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू गाइस मेक इट प्लीज़ लेट मी नो, लीव अ स्मॉल मैसेज इन द कम्युनिटी। किसी के 3 हो गए और किसी के 3 हो गए और किसी के 2 हो गए, ठीक है। ये प्लेट हम लोग यहाँ में से उठा लेंगे। अब आप देख लें किसने 3 रोल लेने हैं और किसने 2 रोल्स लेने हैं। आपकी मर्जी है, जैसे चाहें बांट लें। मैंने तो अपना काम कर दिया। मैं चाय में थोड़ा सा दूध डालूं। माय पार्ट इज डन गाइस। हम एक मॉम आई हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम हम एक मॉम। दैट्स द कलर आई लाइक ऑफ द टी। थोड़ी कड़क वाली टेस्ट आ गया है इसमें क्योंकि मैंने कैन मिल्क यूज किया है और स्पाइसी टी बैग यूज किया है। एंड देयर कम्स द आइसक्रीम ट्रक गाइस। Pink is still here. Moby's kitchen. Yes, that's what we need. Edovision. I was still talking about smell-o-vision. Edovision will be perfect. That chai is just perfect with the paratha. You must have chai with the paratha. I'm mostly a coffee person, but when you have the egg and parathas pink, oh, I'm still happy to see you here. I thought you left. I just saw your comment. I'm talking about it, and I realized you're still here. Thank you, thank you, thank you, thank you. Here, guys, the table is set. मिसेस जावेद भी हमारे साथ हैं, सुपर क्वीन भी हमारे साथ हैं, हम एक मॉम भी आ गई हैं, गरदेसी भाई भी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। Triple C and Joshua here. Oh wow, did I miss them here? Welcome, 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 Triple C and Joe. Dana, are you here? I'm sorry if I missed. शगुफ्ता भी हमारे साथ हैं। मुझसे जावेद कह रही हैं आयशा ने सब मुझे दे दिया। सच्ची? आयशा से पूछ के बताऊंगी। Yummy for the tummy. Yes, absolutely. Perfect breakfast. And a late breakfast. I'm calling that a brunch now because हमने breakfast को miss कर दिया था और हम straight यहाँ पे hi Moby कह रही हूँ मैं कौन थी beautiful baby girl. Thank you very much. I really appreciate that. I'm really happy when you guys show up. Just give me 1 second. I hope I did not miss Dana over here. Where is she? Oh, I'm so sorry. What was I doing? I just get so carried away with the food that sometimes I miss someone. Oh, there she is. Triple C and Joshua. Hey Q, hi. Hello. And hi everyone, she was saying. It's so delicious. Thank you very much. I really appreciate that you're coming over. I just missed that conversation for a few seconds because, hey, I got food in front of me. What do you expect? I'm sorry. When you have food in front of you, you can get distracted easily. That's me. खाना छुपा लें आयशा आ गई। आयशा जल्दी करो नहीं तो सारा खाना जो है इधर उधर हो जाएगा। कोई इधर ही है। Okay, that's good. That's good, guys. I'm happy you enjoyed. I'm really happy and I appreciate. I cannot tell you any more than I always do that I really appreciate from the bottom of my heart the time you guys are giving me and the support that I get from you guys is priceless. So me cooking a little bit is nothing, it's just a bonus. uh, I need to try the tea as well. That's the Tetley brand.
and it says masala tea on the box. Just where you see the breakfast blend, the black tea, and then you will see the masala tea. And I didn't know they have it, but it's pretty good. It's cinnamon and cardamom and few more Indian spices. साकी तो बस देखता रहेगा. अच्छा जी, सब मिलके खाएंगे. ये सुपर क्वीन कह रही सब मिलके खाएंगे. थैंक यू. ये तो अच्छी बात होगी. देखा, अच्छे बच्चे आज लड़ाई नहीं कर रहे. आप आयशा को देती हो. मेरी छोटी सी बहना नाराज हो रही हैं. नो, देखो मेरे पास कितने रोल्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. गदेजी भाई कह रहे हैं पिंक वेलकम माय हाउस. गदेजी भाई, आपने मैसेज छोड़ दिया है, कम्युनिटी पे छोड़ दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरफ आ सकूं. Everybody else who wants to make friends with Gadezi Tech TV, you go ahead and check out his channel. He has a lot of information on his channel that we can use. So I enjoy watching his videos. You always learn something new. You can go over there and you can search him out. और आयशा कुछ सोच रही हैं. Make it 2 each. Don't forget yourself. I'm not going to eat 3. मुझे मोटा करना है क्या? I'm just going to grab 1. That's it. It's for the guys will have more, but not me. I rather just have the omelette and a slice of bread. Homemade mom hi कह रही हैं. Super queen. इधर देखना पड़ेगा. ओके ठीक है. चैनल के साथ आ रही हैं और वो भी खुश हो रहे हैं. सब मेरा है, आयशा कह रही हैं. ओह, तो सुपर क्वीन लड़ाई नहीं कर रही थी और आयशा लड़ाई कर रही हैं. ओके, अंडरस्टैंडेबल. आप देखो, आपको हाउ डू यू लाइक the face of it? I don't know if you guys, let me see. I don't know. I'm not. My eyes have the bright light in them, so I can't really see what you guys are saying. So sometimes I just, okay, host ये hotel रोल बनाए. जो मर्जी समझे भाई. गुरूर खुश हो रही है, गदेसी भाई भी खुश हैं, मोबी भाई भी खुश हैं, आयशा भी. लेकिन मिसेस जावेद खुश नहीं है. मिसेस जावेद सिस्टर क्या हुआ? आयशा को कह रही है कि सब खा लो. चलें देखिए, उन्होंने अपना हिस्सा भी आपको दे दिया. माशाल्लाह कह रही हैं गुफ्तास क्रिएशन. थैंक यू वेरी मच गुफ्तास क्रिएशन. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. We have 16 friends showing, and we have, I think, 9 to 10 amazing, beautiful channels in the building, guys. In the building. We have Triple C and Joe. We have Gardezi Bhai, Gardezi Tech. We have Aisha. We have Supercoin. We have Shugufta. We have Mrs. Javed, sister. And we have Moby, and we have Saki. All the amazing, beautiful channels, guys. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. I hope everybody has left a message on the community so I can later on go to your home from there. Homemade Mom is still here. Homemade Mom is another beautiful channel. You guys should watch out her videos. I really enjoy. I'm telling you guys, when I'm sitting down with my coffee or tea in the evening, I go to everybody's home and I check it out. If you have new videos, Pink is still here, and it's just, it's just amazing how everybody is working so hard. Okay, just give me 1 second. I have to check something out. आपकी लाइव का टाइम हो गया. ओके, आयशा की लाइव स्टार्ट होने वाली है. If you guys want to go and go into Aisha's live, go ahead, guys. My time is almost over anyways. I'm free and I'm just going to chit chat now with you guys. If you want to hang out, Aisha Khudafiz keh rahi hai. Okay, Aisha. Thank you for coming and thank you for staying that long. Jazakallah khair. Saki is saying Allah Hafiz to her. Gardezi bhai keh rahe hain kya Canada mein hai host? No, Gardezi bhai.
I'm in New York. I'm in Brooklyn, New York, very close to Manhattan. मिसेस जावेद भी आयशा को अल्लाह हाफिज कह रही हैं. एंड सुपर क्वीन इधर ही हैं हमारे साथ. गाइस जस्ट आई जस्ट नीड 1 second. I will be right back. Thank you all. Super queen कह रही हैं. Okay, just guys, just 1 second. I'll be right back. ओके जी, सॉरी मैं ज़रा चेक करने गई थी कुछ. ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह. कल फ्राइडे है. फ्राइडे को हम अपने चीटिंग करते हैं फूड में थोड़ी सी. सैम कह रही हैं अल्लाह हाफिज़. जज़ाकल्लाह सैम. गदेजी भाई कह रहे हैं 20 ईयर का माशाल्लाह जवान है. हाँ जी, मेरा मेरा 20 वाला छोटा है और फिर मेरे पास 24 वाला भी है और मेरे पास 28 वाला भी है. माशाल्लाह हर साइज के मौजूद है. अल्लाह हाफिज़ कह रही हैं शगुफ्ता भी अल्लाह हाफिज़ कह रही हैं. फ्रेंड्स हाँ जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी यमी यमी चीज़ के साथ. कल हम चीट करेंगे मीठे के साथ. हम डायबिटिक हैं, तो जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको चीट करने का बहाना चाहिए होता है. तो देखते हैं कल क्या ब्राउनीज बनेगी या कोई केक शेक बनेगा, मुझे पता नहीं, बट आई विल कम अप विद समथिंग. I know I have brownie mix and I have also cake mix and I have some frosting. So we can go ahead and use it tomorrow. We'll come up with something inshallah. So क्या ख्याल है? ठीक है, लंच बन गया, मैंने सर्व कर दिया. अब मैं अपने फैमिली को फीड करूँगी. ठीक, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ, सबको भूख लग रही है. आई विल सी यू गाइस टुमारो. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू गाइस फॉर कमिंग. थैंक यू पिंक. थैंक यू डेना. Thank you everybody. Homek Mom, Mobi, Saki, Shagufta, Gadezi Bhai. Pink is saying, I really enjoy your cooking. Please cook with me one day soon. I will try my best, but right now everything is just so messed up. That's the only time I can, manage my because of my husband's condition. Mrs. Javed कह रही हैं okay sis, Allah Hafiz. Okay Mrs. Javed, Allah Hafiz. Thank you guys. Thank you. Alrighty. So I hope I thanked all of you for coming. Sam, thank you. Jazakallah khair. Gulul, thank you. Amtashakur, Mama, thank you. My mother is always here to support me too. I know that. So thank you very much. Mobi and Saki, and my battery is going to die too. So bye bye. Later, tomorrow.